Hello students, in this video we will discuss a very important topic in thermodynamics, which is Stefan's law and its thermodynamic derivation or proof for BSc Part 1 Physics courses in lecture number 14. The statement of Stefan's law or mathematical form of Stefan's law or Stefan's Boltzmann's law will be also helpful for class 11 physics, NEET and IIT JEE mains preparing students. First of all, we have to know the statement of Stefan's law. Stefan's law states that total radiant energy, say capital E, emitted from a black body is directly proportional to the force power of the absolute temperature of the black body. That is, E varies as T to the power 4, or capital E is equal to sigma into T to the power 4, and which is the mathematical form of Stefan's law. Now write down the statement of Stefan's law. It states that Stefan's law states that total Stefan's law states that total radiant or total energy radiated, that is radiant energy from a black body, total energy radiated per second per unit area of a black body is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of that black body, of the directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. That is capital E. Capital E is the, suppose capital E is the total energy radiated per second per unit area of a black body. That is total radiant energy is capital E, which is emitted from a black body in form of black body radiation, and it is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature, E varies as T to the power 4, or we can write it as E equals to sigma into multiplied by T to the power 4, and it is the mathematical form of Stefan's law, capital E equals to sigma T to the power 4. किसी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से इमिट होने वाला टोटल रेडिएंट एनर्जी, टोटल एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, किसी ब्लैक बॉडी से पर सेकेंड उसके पर यूनिट एरिया से इमिट होने वाला टोटल रेडिएंट एनर्जी और एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी कैपिटल ई से कैपिटल ई, वह प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कैपिटल टी का फोर्थ पावर के, एंड इट इज कॉल्ड
स्टीफन्स लॉ, E varies as t to the power 4 और कैपिटल E is equal to some constant sigma times t4 and where sigma is known as Stephan's constant, and this relation capital E equals to sigma t to the power 4 is called Stephan's law. इसे Stephan's law कहा जाता है। किसी ब्लैक बॉडी से पर सेकेंड, एक सेकेंड में उसके यूनिट एरिया से, पर यूनिट एरिया से, उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल से रेडिएट होने वाला, उत्सर्जित होने वाला, विकृत होने वाली टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा उस ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी के फोर्थ पावर के सीधा समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इट इज कॉल्ड स्टीफन्स लॉ। और we can write it as capital E equals to some sigma times some constant times t to the power 4, and that constant is taken as sigma, which is called Stephan's constant, जहाँ sigma a constant of proportionality है, which is called Stephan's constant, and this form E is equal to sigma t to the power 4, it is called Stephan's law, where sigma is a constant of proportionality called Stephan's constant. The value of Stephan's constant sigma is found to be 5.67 multiplied by 10 to the power minus 8 joule per second per meter square Kelvin to the power minus 4, or 5.67 into 10 to the power minus 8 joule per second is watt, so 5.67 into 10 to the power minus 8 watt per meter square per Kelvin to the power minus 4, और per Kelvin का power 4 और K minus 4, that is sigma is equal to 5.67 multiplied by 10 to the power minus 8 watt meter to the power minus 2 Kelvin to the power minus 4. So the value of sigma is calculated as is found to be 5.67 multiplied by 10 to the power minus 8 watt meter minus 2 K minus 4. Scientist Boltzmann modified Stephan's law as capital E equals to sigma under bracket t to the power 4 minus t0 to the power 4, and this relation is known as Stephan's Boltzmann law. बोल्ट्जमान साहब ने स्टीफन्स लॉ में मॉडिफिकेशन किया कि जब कोई ब्लैक बॉडी जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी है, जो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, उसके सराउंडिंग में भी एक दूसरा ब्लैक बॉडी हो और एक इंक्लोजर हो, कोई परिवेश हो, सराउंडिंग बॉडी हो जिसका टेम्परेचर कैपिटल टी 0 हो, तो वह ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जिसका अमाउंट है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्रॉम दैट बॉडी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज सिग्मा टी टू द पावर 4. नॉट ओनली दैट ब्लैक बॉडी विल रेडिएट एनर्जी, बट दैट ब्लैक बॉडी विल ऑल्सो एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी सिग्मा T0 to the power 4 from its surrounding, that is from the another black body which is kept at the absolute temperature capital T0, and that temperature capital T0, that is temperature of the surrounding body of that black body, is smaller than the temperature of the original black body which is radiating energy at the absolute temperature capital T. जो सराउंडिंग में ब्लैक बॉडी होगा, दूसरा ब्लैक बॉडी, उसका टेम्परेचर सपोज किया जाए कैपिटल T0 K है, जो कि फर्स्ट ब्लैक बॉडी और ओरिजिनल ब्लैक बॉडी जो कैपिटल टी टेम्परेचर पर
एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो कैपिटल टी टेम्परेचर से टी जीरो सराउंडिंग का जो ब्लैक बॉडी है उसका टेम्परेचर टी जीरो है वह स्मॉलर होगा। तो स्टीफन साहब ने बोल्ट्जमान साहब ने स्टीफन्स लॉ में मॉडिफिकेशन किया एंड this law sigma is equal to this law Stefan's law is capital E equal to sigma T4, suppose it is equation number 1, and this Stefan's law was modified by and another scientist Boltzmann, and the relation is capital E equals to sigma under bracket T to the power 4 minus T0 to the power 4। तो बोल्ट्जमान साहब ने यह बताया कि जब किसी ब्लैक बॉडी सपोज जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी केल्विन है और वह ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रहा है, रेडिएंट एनर्जी को इमिट कर रहा है, उससे एनर्जी रेडिएट हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में अगर दूसरा ब्लैक बॉडी उससे कम टेम्परेचर पर रखा जाए जिसका टेम्परेचर सपोज किया जाए T0 केल्विन है, तो वह ब्लैक बॉडी सिग्मा T4 अमाउंट का एनर्जी उस ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड न केवल रेडिएट होगा बल्कि वह ब्लैक बॉडी सराउंडिंग से सिग्मा T0 टू द पावर 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड एब्जॉर्ब भी करेगा। सो नेट एनर्जी रेडिएटेड since the temperature of the black body, first black body capital T is larger than the temperature of the surrounding black body, since that is T Kelvin temperature is larger than T0 Kelvin temperature, so net amount of energy radiated by that black body will be equal to sigma T to the power 4 minus sigma T0 to the power 4, and sigma can taken out from the bracket, so net energy radiated per unit area per second from that black body is equals to sigma under bracket T to the power 4 minus T0 to the power 4, and suppose it is equation number 2, and this modified formula, this modified relation for the radiant energy per unit area, net radiant energy, that is net radiant energy per unit area per second from the black body, net radiant energy per unit area per second from the black body, from the first black body, capital E equals to sigma under bracket T to the power 4 minus T0 to the power 4, and this relation is called, which is the modification in Stefan's law given by equation number 1, which is capital E is equal to sigma T to the power 4, and this modified formula, that is modification in Stefan's law given by 1, is capital E equals to sigma T to the under bracket T to the power 4 minus T0 to the power 4, and it is called Stefan's Boltzmann law. It is called Stefan's Boltzmann law, where T0 is the temperature of the surrounding black body, which encloses the original black body or first black body. T0 केल्विन सराउंडिंग ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर है जो कि फर्स्ट ब्लैक बॉडी और ओरिजिनल ब्लैक बॉडी को, जो इनिशियल ब्लैक बॉडी हमने सपोज किया है उसको सराउंड करता है, तो उसको घेरता है, तो उस सराउंडिंग ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T0 केल्विन है। तो वह ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है पर सेकेंड उसके पर यूनिट एरिया से, वह रेडिएशन अमाउंट ऑफ रेडिएशन सिग्मा T टू द पावर 4 तो रेडिएट करेगा ही, इसके अलावा वह ब्लैक बॉडी सराउंडिंग ब्लैक बॉडी से सिग्मा T0 टू द पावर 4 अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा। देयरफॉर उस ब्लैक बॉडी के द्वारा, फर्स्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा जो नेट रेडिएंट एनर्जी इमिट होगा उसके पर यूनिट एरिया से पर सेकेंड में वह कैपिटल E इक्वल टू सिग्मा अंडर ब्रैकेट T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, and this relation is called Stefan's Boltzmann law. This relation is called Stefan Boltzmann law.
This relation is called Stefan-Boltzmann law, where capital T0 equals to absolute temperature of the surrounding black body, that is temperature of the enclosure. Surrounding black body is the enclosure to the first black body. Absolute temperature of the surrounding black body, or we can say it as enclosure, or the enclosure, temperature of the enclosure. नाउ थर्मोडायनामिक डेरिवेशन और प्रूफ ऑफ स्टीफन्स लॉ. अब हम लोग स्टीफन्स लॉ को थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल के हेल्प से डिराइव करेंगे. फॉर द डेरिवेशन ऑफ स्टीफन्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल, सपोज एन enclosure, say a cylinder of perfectly reflecting walls fitted with a reflecting piston is filled with black body radiation. Black body radiation exerts pressure on the walls of the enclosure or the walls of the cylinder, inside which the black body radiation is kept. The pressure exerted by black body radiation on the walls of the enclosure or the cylinder is called pressure of diffuse radiation, denoted by the symbol small p, and it is equal to 1/3 of the energy density, small u. स्टीफन्स लॉ का डेरिवेशन के लिए सपोज किया जाता है कि एक सिलेंडर जिसके वॉल्स परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है एंड उस सिलेंडर में पिस्टन लगा हुआ है जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, एंड उस सिलेंडर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फिल किया गया है, रखा गया है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपने इंक्लोजर और सिलेंडर, हमने सपोज किया है यहां सिलेंडर इंक्लोजर के रूप में, जिसमें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रखा गया है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज फिल्ड इनसाइड ए सिलेंडर ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वॉल्स एंड ऑल्सो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग पिस्टन. सिलेंडर के वॉल्स भी एंड सिलेंडर के पिस्टन भी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्लोजर और सिलेंडर के इनर वॉल्स के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है. तो सपोज कैपिटल T विद द टेम्परेचर ऑफ द वॉल्स ऑफ द enclosure or the cylinder. A small p is the pressure of diffuse radiation. Black body radiation, क्योंकि जिस वेसल में, जिस इंक्लोजर में, जिस कंटेनर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रखा जाता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उस इंक्लोजर के, उस वेसल के, उस कंटेनर के इंटीरियर वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन कहा जाता है. एंड प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल यू, एनर्जी डेंसिटी का सिंबल स्मॉल यू होता है, तो उसका 1/3 होता है. P इक्वल टू प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन स्मॉल p इक्वल टू U/3. तो लेट U बी द एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनसाइड एंड इनक्लोजर at the absolute temperature capital T, where capital T is the temperature of the inner walls
of the enclosure, that is cylinder. A small p is the pressure due to diffuse radiation, and capital V, say capital V is the volume of the black body radiation. Using first law of thermodynamics, we have dq is equal to amount of heat given to the system is equal to change in internal energy of the system, du, plus work done by the system, dw, and dw can be written as p dv. So first law of thermodynamics is dq equals dq amount of heat added or supplied to the system, dq is equal to du, change in internal energy of the system, plus work done by the system at constant pressure p is dw is equal to p dv. So now write down, let a small u be the energy density of black body radiation inside an enclosure. We have taken enclosure as a cylinder, that is a cylinder at absolute temperature capital T, absolute temperature कैपिटल टी, इंक्लोजर के इंटीरियर वॉल्स का टेम्परेचर कैपिटल टी है, जिसके साथ ब्लैक बॉडी रेडिएशन थर्मल इक्विलिब्रियम में है. स्मॉल पी बी द प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन और रेडिएशन प्रेशर, be the small p be the pressure of diffuse radiation और radiation pressure. रेडिएशन इंक्लोजर के वाल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, उसे प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन और रेडिएशन प्रेशर कहा जाता है. p be the रेडिएशन प्रेशर और प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन, एंड कैपिटल V the volume of the black body radiation which is equal to the volume of the enclosure. क्योंकि जिस इंक्लोजर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रखा जाएगा तो उस इंक्लोजर का वॉल्यूम भी है, जो कि उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी वॉल्यूम उसको सपोज किया जाएगा. Now using the first law of thermodynamics, using first law of thermodynamics, first law of thermodynamics का यूज करने पर we have dq amount of heat supplied to the system, dq. This black body radiation inside an enclosure, it also constitute a system. ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्लोजर में सिचुएटेड है, सिलेंडर के अंदर स्थित है, सिलेंडर के अंदर रखा गया है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी सिस्टम को फॉर्म करता है. तो dq इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इक्वल्स टू du चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सम पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हिच इज du, प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी इज यूज्ड by the system for work done by the system at constant pressure P, and that work done dW is written as is equal to P multiplied by dV, that is pressure at constant pressure P, increase in volume of the system is dV. So dW equals to P into dV. Suppose it is equation number 1. It is first law of thermodynamics, dq equals to du plus P into dV. Pressure of diffuse radiation
small p equals to 1/3 of the energy density. We have taken energy density of black body radiation as a small u. So small u, pressure of diffuse radiation, that is radiation pressure, is equal to 1/3 of the 1/3 of the energy density. A small p equal to E is equal to U upon 3. Suppose it is equation number 2. Now we have to use Maxwell's second thermodynamical relation, which is delta S upon delta V at constant temperature is equals to del P. We can write Maxwell's second thermodynamical relation as del S, not delta, it is del partial differential. Del S upon del V at constant temperature T equals to del P upon del T at constant volume V. So now using Maxwell's second thermodynamical relation, which is del S partial differentiation upon del V at constant temperature T equals to del P. In RHS it is del P partial differentiation of pressure P upon del T at constant volume V. But we know that change in entropy ds equals to dq upon T. So using this using the formula for entropy or relation for entropy, which is the mathematical form of second law of thermodynamics in terms of entropy, as change in entropy ds equals to amount of heat dq upon absolute temperature. ds equals to dq upon T, which is also the mathematical form of second law of thermodynamics in terms of entropy. So ds is equal to dq upon capital T. Therefore del S equals to, we can write del S LHS of in the numerator of LHS of Maxwell's second thermodynamical relation is del S. So in place of del S we can write del Q upon T. So we can write in place of del S की जगह लिखा जा सकता है, we can write 1/T del Q upon del V. 1/T को ब्रैकेट के बाहर, taking 1/T out of the bracket, because del S equals to del Q upon capital T. So in LHS of Maxwell's second thermodynamical relation, we can write 1/T out of the bracket. In place of del S, we can write del Q upon del T, and taking capital T in the denominator out of the bracket. So it is 1/capital T under bracket del Q upon del V at constant temperature. T को डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के बाहर कर लिया गया, डेल एस के जगह डेल क्यू अपॉन टी यूज किया गया, कैपिटल टी को बाहर कर लिया गया, तो 1/T del Q upon del V at constant temperature equals to del P. In RHS it is del P upon del T at constant volume V. Therefore we have now del Q upon del V at constant temperature T equals to T multiplied by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज यहाँ किया गया, T को RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे, so it is capital T multiplied by del P upon del T at constant volume V, and suppose it is equation number 3 of thermodynamical proof. Now in place of del Q we can write del U plus P del V using equation 1, which is Maxwell's which is first law of thermodynamics. So in LHS of equation 3, in the numerator, in place of del Q we can write del U plus P del V. So using equation 1, that is first law of thermodynamics, in the LHS of equation number 3, that is del Q, in place of del Q we can write del U plus P del V. So we can write now
or so LHS become, in place of del Q we can write del U plus P small p multiplied by del V upon del V, डिनोमिनेटर में del V है LHS में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, जिसको हम ब्रैकेट के बाहर नीचे में सफिक्स में कैपिटल T लिखने का मतलब है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्वल्स टू RHS इज नाउ T multiplied by del P upon del T at constant volume V. RHS is equals to T multiplied by del P upon del T at constant volume V. Or we have now we have del U upon del V at constant temperature T plus P multiplied by del V upon del V. Del V in the numerator and denominator will cancel out. So second term में केवल P बचेगा, प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन हमने यूज किया है स्मॉल p, वह बचेगा रेडिएशन और रेडिएशन प्रेशर. सो वी कैन राइट LHS as del U upon del V at constant temperature T plus P multiplied by del V upon del V. We can write LHS as, so it is only P multiplied by del V upon del V, that is only P, equals to RHS is now T multiplied by del P upon del T at constant volume V. Therefore now we can write del U by del V at constant temperature T equals to del T, is equal to T multiplied by del P upon del T at constant volume V minus a small p, minus P. अब P को LHS से RHS में करने पर प्लस साइन, प्लस P की जगह माइनस P RHS में हो जाएगा. टेकिंग अ स्मॉल p, that is taking radiation pressure or pressure of diffuse radiation in RHS, we have del U or del U upon del V at constant temperature T equals to T multiplied by del P upon del T at constant volume V minus the small p. Del U by del V, capital U is the internal energy of the system. So du is change in internal energy of the system. यहाँ del U है partial differentiation, partial change in internal energy of the system. Del U by del V at constant temperature T equals to T multiplied by, capital T is the absolute temperature of the interior or absolute temperature of the black body radiation or interior of the enclosure. Capital T is the absolute temperature of the interior, that is walls of the enclosure, or since black body radiation is in thermal equilibrium with the internal walls of the enclosure, so temperature of the black body radiation will also equal to capital T. So del U upon del T, del U upon del V at LHS is del U upon del V at constant temperature T बराबर is equal to capital T multiplied by del P upon del T at constant volume V minus P. So it is equation number, suppose it is equation number 4. Now putting P as a small p as U by 3. यहाँ में P यूज किया है, सभी P को यहाँ पर प्रेशर को स्मॉल p समझना चाहिए, जहाँ भी प्रेशर है वहाँ स्मॉल p समझना चाहिए. प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन और रेडिएशन प्रेशर, जहाँ भी प्रेशर का टर्म है वहाँ स्मॉल p समझना चाहिए. प्रेशर ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन और रेडिएशन प्रेशर. नाउ यूजिंग द रिलेशन स्मॉल p is equal to U upon 3, क्योंकि we know that pressure of diffuse radiation or radiation pressure, a small p is equal to 1/3 of the energy density of black body radiation. That is a small p is equal to U by 3. So in RHS we can write in place of a small p in both terms as U by 3. So we have now and
internal energy of the system, capital U is also equal to a small u multiplied by capital V. That is energy density, that is energy per unit volume multiplied by volume. So, in place of capital U in LHS, we can write a small u into capital V. That is energy density multiplied by volume of the enclosure or volume of the black body radiation is equal to internal energy capital U of the system, that is black body radiation. Or so we can write in LHS in place of u capital U as a small u into capital V. Internal energy we can write del in place of capital U we can write u a small u into capital V. So it is del a small u into capital V in place of capital U. Internal energy capital U के जगह पर energy density a small u multiplied by volume V upon del V at constant temperature equals to T. RHS now is T multiplied by del T multiplied by under bracket del, and in place of P we can write pressure of diffuse radiation or radiation pressure as U by 3. So it is del U upon 3 upon del T at constant volume V minus second term is a small p, that is also pressure of diffuse radiation, which is a small u, energy density upon 3. Since p is equal to a small p is equal to u by 3, a small u by 3, 1/3 of the energy radiation. So equation 4 is now replaced by this relation. Suppose it is equation number 5, in which we have substituted a small u into capital V in place of internal energy of the system capital U, and a small u by 3 in place of a small p, that is pressure of diffuse radiation. So this we get this relation. Now we can write LHS as energy density of energy density a small u of the enclosure black body radiation is constant. So we can write differentiating V, that is volume of the black body radiation or volume of the enclosure with respect to volume. So LHS is now only a small u multiplied by del V upon del V, that is 1. Partial differentiation of V, volume V with respect to volume is 1. So LHS is now only u. LHS is now only u, energy density, which is energy density of the black body radiation is constant. So LHS is now only u, and RHS is now T. RHS is now T upon 3 del u upon del a small u upon del T minus u by 3. So we can now write in LHS as only u. So equation 5 can further proceed as equation 5 से we can obtain in LHS it is only u multiplied by del V upon del V, it is 1. Partial differentiation of volume V with respect to volume V 1. Energy density is constant, so it is capital U equals to in RHS it is T multiplied by in the numerator del in place of P u by 3 to del u by 3, 1/3 को बाहर कर दें, 1/3 can be taken out of the bracket, so it is T upon 3 under bracket del u upon del a small u, that is a small u is the energy density of radiation, del u upon del T at constant volume V minus u upon 3. Now we have u a small u in LHS plus u by 3 minus u by 3 from RHS is taken into LHS as plus u by 3. माइनस u by 3 को LHS में लाने पर प्लस u by 3 हो जाएगा. फर्स्ट टर्म तो LHS में स्मॉल u है ही, एनर्जी डेंसिटी ऑफ
radiation equals to T upon 3 RHS is T upon 3. Now RHS becomes only T upon 3 del U upon del T at constant volume V. So del U upon del T at constant volume V, और LHS becomes now 3 LCM होगा, तो 3U plus U upon 3, that is 4U upon 3. So LHS becomes 4U upon 3. 4U upon 3 equals to T upon 3 del U upon del T at constant volume V. Now we have 3 and 3 will cancel out in the denominator of LHS and RHS. 3 and 3 will cancel out. Now we have del U upon U, U का टर्म एक साथ एक साइड में, एंड इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई टी का टर्म एक साइड में, LHS टी का टर्म एक साइड में एंड यू का टर्म एक साइड में. तो यू के टर्म को LHS में del U अपॉन यू इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई del T अपॉन del T, 4 मल्टीप्लाइड बाई del T अपॉन T. Suppose it is equation number 6. Now integrating both sides. U का टर्म एक साइड में आ गया LHS में एंड RHS में T का टर्म हो गया. अब दोनों इंटीग्रेशन इक्वेशन 6 के, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 6. अब ये बोथ साइड्स का टर्म, इक्वेशन 6 के बोथ साइड्स का टर्म इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म में है, लॉग का फॉर्म है, इंटीग्रल dx अपॉन x इक्वल टू log x. So integrating both sides of equation 6, integrating both sides of equation 6, we have integral del U upon U equals to 4 multiplied by integral del T upon T, और integral del U upon U is log U बेस एक्सपोनेंशियल होगा, बेस स्मॉल ई इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई log T plus log K, which is where K is the constant of integration. So now after integrating equation 6, we get log U in LHS equals to 4 multiplied by log T base exponential small e plus log base exponential K. और नाउ वी कैन राइट फर्दर. अब आगे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं इस रिलेशन से, इस इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. सो वी हैव और log U इक्वल्स टू log e टू द पावर 4, लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करके, n log m, स्मॉल n log स्मॉल m इक्वल टू log m टू द पावर n. तो 4 इंटू लॉग टी बेस एक्सपोनेंशियल है, तो 4 इंटू लॉग टी इक्वल्स टू वी कैन राइट लॉग टी टू द पावर 4. लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया गया, प्लस लॉग के. नाउ अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल्स टू लॉग m इंटू n, और वी हैव log u इक्वल्स टू log t to the power 4 into k, that is k into t to the power 4. We can write it as RHS as log k into t to the power 4. That is we have now log u is equal to log under bracket k t to the power 4. एक बार फिर से RHS में log का प्रॉपर्टी यूज किया गया, log m plus log n is equal to log mn. So log t to the power 4 plus log k equals to log under bracket k t to the power 4. अब both sides में log है, therefore we can write now logarithm in both sides, log u is equal to log k t to the power 4. Therefore we can write u, energy density of radiation, black body radiation small u equals to k into t to the power 4. That is we get the relation u varies as u, energy density of black body radiation is equal to constant k times t to the power 4. So we can write it as u varies as t to the power 4.
that is energy density of black body radiation is directly proportional to fourth power of the absolute temperature of the enclosure, interior of the enclosure or black body radiation. Now, energy emitted per unit area, radiant energy or energy emitted per unit area per second from a black body, that is capital E, is also proportional to energy density, a small u. So we have capital E varies as u and u varies as T upon 4. Since capital E, that is radiant energy from a black body emitted per unit area per second, that is capital E, is directly proportional to energy density of black body radiation. So E varies as u. So we can write this relation as suppose this relation u varies as T to the power 4 as equation number 7, and radiant energy per unit area per unit time from a black body is directly proportional to its energy density of the black body radiation. So E varies as u, and here u varies as T to the power 4. Therefore, we have E varies as T to the power 4, or E equals to sigma T to the power 4, which is Stefan's law, or we can write E equals to sigma T to the power 4. That is proved. That is Stefan's law is proved. Thus, we have derived or proved Stefan's law using thermodynamic principle. Now this video is completed. Thanks all of you for watching my YouTube channel, Physics Quantum Classes. Thank you very much.